from the national capital, where Union Environment Minister Bhupendra Yadav has given a statement following a review meeting on the air quality situation in Delhi NCR. He stated that he has asked the Delhi government to prepare a plan for the next year on this issue. He further explained that the major reason for dust is potholes. He also added that 61 traffic hotspots have been identified. Let's in fact listen to what he stated. सरकार से कहा है कि वो अगले साल का अपना एक पूरा प्लानिंग तैयार करे, क्योंकि ये ध्यान में आया था कि दिल्ली में, जैसा कि सीपीसीबी वालों ने भी बताया है, कि इंडस्ट्री में इक्विपमेंट लगाने की बात है। उसके साथ जो हमारे डस्ट का जो सबसे बड़ा कारण है कि जगह जगह सड़कों पे जो गड्ढे रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की बात करी है। दिल्ली के ग्रीनिंग स्पेस एरिया को बढ़ाने की बात करी है। सबसे ज़्यादा जो बात करी है कि दिल्ली में 61 ऐसे ट्रैफिक हॉट स्पॉट की पहचान करी है, जिनको अगर ठीक से मैनेज किया जाए, वहाँ के एनक्रोचमेंट को, पार्किंग को, आरओबी को अगर करे, तो इन 61 पार्किंग स्टेशंस को आगे क्लियर करके, ताकि वहाँ पर हमारे व्हीकल का, और सबसे बड़ी बात है CAQM एक एक्सपर्ट कमेटी भी बना रहा है जो व्हीकल पॉल्यूशन के बारे में और विचार करने का काम करेगा। बाद में फिर CAQM उस एक्सपर्ट कमेटी के आधार पे उन पे समीक्षा करेगा। हमने दिल्ली सर। My colleague Brian Thomas joins us on the broadcast to give us more on this. Brian, of course, based on this statement that has been issued by Union Environment Minister Bhupendra Yadav, he's essentially saying better be safe than sorry next year. Have a plan of action for next year before once again the people of Delhi choke in these the AQI, the smog, and he's also in fact spoken about potholes. What more can you tell us? Oh, well, yes, clearly after a review meeting on Delhi NCR's air pollution itself and air quality, Union Environment Minister Bhupendra Yadav said that the centre has asked the Delhi government to prepare a comprehensive plan for next year, and also noted that potholes remain a major source of dust pollution, and that 61 traffic hotspots have also been identified across the city. Not only that, he added that the CAQM is setting up an expert committee on vehicular pollution, and in December itself, the government will be holding meetings with officials from Ghaziabad, Noida, Faridabad and Gurgaon, and even on the issue of stubble burning also, he said a separate meeting with Haryana and Punjab will also be organized in Chandigarh. Yes.